right, welcome back to my show, Music and Love as Raves Sings It. And this is your host, Raves. And yes, I missed all of you like crazy. Right, now, today's a very special day. It is World Music Day, so I wish all the talented singers, musicians, and music directors a lyrical World Music Day. Right, now today's segment is music and only music, and tonight we have a very special guest with us. She is known for her famous songs in Ashiki 2 and this upcoming Sanjay Dutt movie, Police Giri. And you've seen her also at the music launch of Police Giri, Palak Muchal. Palak, thank you so much for coming on my show, and happy World Music Day. Thank you so much. All right, what's World Music Day according to you? I think according to me it's not special because every day is music day for me. All right. Because music मेरी life में बहुत ज़्यादा मायने रखता है. अगर music जी. नहीं होता तो I don't think मैं exist करती. Okay. So I think एक बहुत अच्छा concept है कि एक दिन सारी musicians एक साथ celebrate जी, करते हैं. But for जी. me every day is a music day. World Music Day. That's like amazing. You first started off with Kalyanji Anandji's Little Stars, and you also worked with a lot of charitable organizations. Yeah. How was the experience? How was it working with the late Kalyanji Anandji? Actually, I'm singing from the age of 2.5 Okay. years, All right. and though I'm a Marwadi and nobody in my mama's side nor from my papa's side sings, Okay. but I got a very good support from my family. और कल्याण जी आनंद जी के ग्रुप में मेरा सिलेक्शन हुआ था when I was 4. Okay. और it was a great experience working with me, working with him, performing with him because बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ उनसे सीखने को मिली. Okay. और फिर मैंने क्लासिकल सीखना स्टार्ट किया, देन उर्दू सीखी, देन That's प्लेबैक wow. सिंगिंग सीखी, सो That's amazing. वॉइस कल्चर भी Okay, सीखा, देन आई okay. शिफ्टेड टू मुंबई. Was your dream always like to be a singer, or was it Yes. something else? Like you I had- always wanted to be a successful playback singer in particular. That's nice. Who was your inspiration? Lata ji. I've grown up listening to Wow, her that's songs. amazing. Any of your Lata Mangeshkar favorites? लता जी का हर गाना मेरा फेवरेट सॉन्ग है, बट स्पेशली मुझे लग जा गले बहुत पसंद है. Can we hear it? Yeah, Your sure. fans would also like to hear you sing today. Sure. लग जा गले के भी हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से. Wow, like amazing. I Thank think you. anybody who listens to this beautiful woman's voice, I think automatically falls in love. All right. And your entry into Bollywood, you first started singing with Himesh Reshmiya, as in his film Damadam. Yes. And after that, your famous songs were, I think your famous entry was with Ashiki 2. I think my entry, the first big break was Ek Tha Tiger's Yes, Lapata. Ek Tha Tiger, yeah. Yeah, so I got a kind of recognition from Okay. Lapata, then I'm getting so much appreciation Okay. for my Ashiki 2 songs. I'm really Yeah, happy. Ashiki 2 was like the biggest favorite all time after the first Ashiki, as a matter of Yeah. fact. How did this song Lapata come about in Ek Tha Tiger? What was the whole concept? I behind got this song because of Salman sir, because Okay. he recommended my name to Aditya Chopra ji. it? Okay. So actually ऐसे ही जब मैं 15 years की थी तब मैं जी. सलमान जी से पहली बार मिली. Oh, Then he okay. recommended my name to Sajid Wajid sir for a very small portion in Okay. a song called Meherbaniya from the Veer Okay, film. yes, yeah. Though it was not kept in the film, Mhm. in the CD, but it was there in the movie. Okay. Then okay. he called me up in a show, live show on Okay. some channel, Mhm. and he made me sing in 17 languages since I sing in 17 languages. So he made me sing all the mukhras. Wow. Then one day he told me कि you're soon gonna sing for Yash Raj movie. So Okay. I took it as a compliment, a casual compliment. पता नहीं था कि actually कोई phone आएगा. Okay. और मुझे उसी के 1 महीने बाद सोहेल सेंसर का कॉल आया कि Yeah. come to Yash Raj Studios. Okay. और जब मैंने गाना डब किया तो बड़े आराम से विदाउट एनी प्रेशर डब हो गया, बिकॉज आई वाज नॉट नोइंग दैट इट वाज फॉर द फिल्म कॉल्ड एक था टाइगर और उस पर सलमान सर और कैटरीना कैफ एक्ट करने वाले.
फिर थोड़े दिन बाद सलमान सर से फिर से मुलाकात हुई. देन ही टोल्ड मी कि तुमने जो गाना गाया था ना जी उस पर मैंने एक्टिंग की थी. क्या So I was so excited because I couldn't have asked for anything more than एक था टाइगर. इट्स ना बड़ा बैनर है, हर कोई यशराज फिल्म्स के साथ काम करना चाहता है. मुझे इतनी जल्दी गाने को मिल गया था. So I was so happy. That's amazing. So Lapata also like had a kind of a Latina kind of rhythm. Yes, Latin rhythm, right? Yeah, it's like I think most music directors are like very much enthused with the whole salsa, samba, and like all the all the how should I say, all the genres of like music. So can we hear Lapata? Yes, sure. एंड जब आपने लैटिन म्यूजिक की बात की तो मैं इस गाने के बारे में बताना चाहती हूँ कि इसका जो अरेंजमेंट हुआ है उसमें क्यूबन इंस्ट्रूमेंट्स लाइव बजाए गए हैं. क्या बात और वो क्यूबा में ही रिकॉर्ड हुए हैं लाइव इंस्ट्रूमेंट्स. अरे वाह. और क्यूबा तो मेरी सबसे फेवरेट कंट्री है. सो हियर इज द लापता सॉन्ग. आँखों को यूं बंद करके धीमे धीमे गिन गिन के ढूंढो हमें, हम हैं कहाँ. भोले से फसाने हैं, ज़मीं से बेगाने हैं, देखो हुए हम तो हवा. दिल के किनारे ख्वाबों के नीचे है खोया खोया अपना जहां. मैं लापता तू लापता, होशो हवास है लापता. Thank you. Amazing, amazing. Actually, if the Latin pop singer, Queen of Latin pop, Gloria Estefan, were to hear this, I think she would recommend you to sing in her upcoming upcoming album called The Standards. That's a big compliment. Thank you. Okay, what's happening when what's happening? I mean, you're still working with charitable organizations. I heard you donated at least 25 million. Yes, actually, I along with my brother do live shows for heart patients, and that's very nice. Yeah, till now we have raised 2.87 crores for the operation of 586 heart patients. So we have 623 more in our waiting list. I'm trying my best to help them out. That's really, really generous, actually. I mean, that's like that's really amazing. Who are your favorite singers apart from Lata ji? अपार्ट फ्रॉम लता जी मुझे श्रेया जी बहुत पसंद है और अभी मेरी फेवरेट वही हैं. और सोनू जी के सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद हैं. गज़ल्स में मुझे गुलाम अली खान साहब को सुनना बहुत पसंद है और क्लासिकल में आमिर खान साहब को सुनना बहुत पसंद है. क्या बात है. और अंग्रेजी में English में I Mariah Carey and Britney, then Taylor Swift. I love Taylor Swift songs. Nice. You can sing any Mariah Carey song? Mariah Carey, I would prefer the Titanic one. Sure. Yeah. Titanic? Mariah Carey never sang Titanic. No, I am not gonna sing Mariah Carey. I prefer Titanic. But because that's my favorite now. Okay. English now. Let's hear it. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go. Far across the distance and spaces between us, you have got to show you go. Near, far, wherever you are, I believe that the heart will go. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. How do you maintain such a beautiful voice? How do you do riyaz or vocal? I mean, otherwise known as vocal exercises. Yeah, of course I do riyaz. I practice for 1.5 hours. Okay.
every day, and apart from that, I sip a lot of garam pani. That's nice. Then I eat ice cream once in a year. Then cold drink once in 4 years. Okay. So Wow, that's like amazing. What's your next step after Police Giri? well, I've sung 72 songs which are gonna come this year. Okay. So next projects are Zanjeer 2. I've sung with Meet Brothers Wow. in the movie Zanjeer Okay. 2 Okay. for Priyanka Chopra. Okay. Then there's a movie called Traffic in which I've sung for Mithun sir. Okay. Then I have 6-7 songs coming up for Himesh ji. Then यशराज की मूवीज के लिए गाया है, सुहेल सेन जी के लिए रिसेंटली डब किए हैं कुछ सॉन्ग्स राकेश नाथ हाँ जी जी। की मूवी में. सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. उम्मीद करती हूँ कि सबको पसंद आएंगे जितना अभी तक के गाने Oh, पसंद I आए हैं. think they will. They definitely will like it, and I'm sure you guys will like it, right? Okay. And I mean, how is your rapport with Himesh Reshamia? I mean, you sung for his film Damadam, and you're making songs for him again. So Yeah. like, I think you must be having a long-standing kind Yeah, of a it's my rapport with Himesh ji is very good so far. Okay. Actually, when I dub for Himesh ji, it's जी. a very different kind of feeling because उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जी. एक स्पेशल क्वालिटी उनकी ये है कि जब भी मैं उनके साथ गाती हूँ तब सिंगर्स को एक बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होती है माइक पे. तो जी. मुझे जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मुझसे उससे ज़्यादा मुझे हिमेश जी से मिलती है. हिज बॉडी जी. लैंग्वेज, हिज स्टाइल, उनका इंकरेजमेंट. और सबसे हाँ बड़ी जी. बात, वो सिंगर के साथ हमेशा मैंने उन्हें कभी भी जी. डबिंग्स के टाइम बैठे हुए नहीं देखा है. जी. वो खड़े रहकर ऐसा लगता है कि वो आपके साथ गा रहे हैं. Wow. सो मैंने जैसे कि बताया 6-7 सॉन्ग्स और मैंने उनके साथ गाए हैं जो कि रिलीज होने वाले हैं. जी. तो looking forward for them. Can we hear a bit of his? Can we hear a bit of the song that you sang for him way back in 2011? Damadam? Yes. Okay. सात समंदर सारे डूब जाए, सात समंदर सारे डूब जाए तेरे नैनों के अंदर. दमादम मस्त 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 कलंदर, दमादम मस्त 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 कलंदर. Amazing, amazing. Any plans of you entering into Bollywood as an actress? No plans. Not at all. Because most of our singers, be it Ali Zafar, be it Himesh Reshamia, they all have entered into films as an actor, not just as a singer. I mean, is there Yeah. any? I mean, maybe in the near future, perhaps. नहीं, आई रियली अप्रिशिएट दैट कि इतने सारे सिंगर्स हैं जो कि एक्ट जी. कर रहे हैं, किया भी है पहले. बट फॉर मी पर्सनली जैसे कि मैंने बताया, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर. जी. एंड सिंस आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स टू सिंग नाउअडेज, सो जी. मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ इसी पे फोकस करूं और एक्टिंग करने का मेरा कभी भी कोई इरादा नहीं है. एंड आई थिंक आई एम नॉट गुड ऑल्सो इन एक्टिंग. सो जो लोग करते हैं जी. उनमें गट्स है कि वो एक्ट कर पाए. जी. सो मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग की तरफ है. Amazing. And any solo albums? Yes, of course. I'll plan to launch a solo album soon. But पहले Bollywood में मेरे थोड़े ज़्यादा गाने आ जाएं, उसके बाद I'll definitely plan for it. That's like amazing. Do you think, I mean, like music is going to grow up further as, I mean, in the industry? Yes, of course. क्योंकि अभी का Because with a जो lot of remixes, Yes. and of course a lot of plagiarism. I mean, is there a chance? Although I really like the concept that they're using Cuban rhythm, they're using jazz, they're using rock, they're using R&B, they're using Punjabi rap also, Honey Singh and Imran Khan, for instance. What do you think is the future? See, I believe in the phrase that only thing which is going to exist is change. Yeah. So I take it very positively क्योंकि Right. आज का जो सीन है इंडस्ट्री का इतना अच्छा है कि जी. अगर आप में टैलेंट है तो जी. आपको एंट्री मिल जाएगी. Of course. और अगर आपकी आवाज़ उस सॉन्ग पे सूट करती है तो Of आपको course. डेफिनेटली गवाया जाएगा. Definitely. और कोई मोनोपोली नहीं है किसी की भी इंडस्ट्री में. और आज एक एक गाना 10-10 सिंगर्स गाते हैं. Yes. उसके बाद जो बेस्ट होता है उसका सॉन्ग रखा जाता है. तो Yes. अल्टीमेटली जो ऑडियंस है उनको बेस्ट सुनने को मिलता है. Yeah. और वेस्टर्न एलिमेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं Correct. हमारे म्यूज़िक में. तो ऑफ कोर्स ऑडियंस वही पसंद